So now here we are beginning exercise 6.2 question number 5. Now I am reading the question. Question is in the given figure if DE is parallel to OQ. Here we can see that what they have given, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. अगर DE पैरेलल है OQ को और DF पैरेलल है OR को, देन वी हैव टू शो मीन्स टू प्रूव. तो यहाँ पे हमने गिवन लिख दिया कि ये हमको गिवन दिया है कि DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के. हियर यू कैन सी that what they have gave you. So here that DE is parallel to OQ and this DF is parallel to OR. अगर ये चीजें दी हैं तो प्रूव करो. क्या प्रूव करना है? that EF is parallel to OQ. तो EF और QR यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल कैसे होंगी? So when we will prove the ratio, if we prove that PE upon EQ and that will be equals to PF upon FR. अगर हमने ये वाली चीज प्रूव कर दी, if we prove this, then we can only write that EF is parallel to QR. यानी we have to do hard work, we have to prove this. means कहाँ से हमको ये लाना है और कहीं से हमको ये लाना है. अगर हम ये दो चीजें ले आएंगे एंड वी प्रूव इट इक्वल, देन ओनली वी कैन राइट दैट EF इज पैरेलल टू QR. So here we will begin our process. In this chapter, triangle, our sense of thinking should be very good. अगर हमारा माइंड क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फिगर को तोड़ना पड़ रहा है, हम कुछ फिगर को तोड़ रहे हैं और वापस से हम उसको जोड़ रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तभी हम उनको समझ पाएंगे. यानी हमारा थिंकिंग उस साइड उस वे में बहुत अच्छा होना चाहिए. देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइंगल. सो हियर नाउ यू कैन सी द फिगर. अब हमको एज वी कैन सी इन आवर फर्स्ट गिवन दैट DE इज पैरेलल टू OQ. DE और OQ का काम है, यानी रेस्ट फिगर वी डजंट वांट, means we don't want this thing, as you can see over here we don't want, so we are removing it. अगर हमने रिमूव किया तो हमारे सामने इतनी फिगर बच गई है and now we will work on that. Now here as you can see your DE is parallel to OQ, means one ratio you can write, that is that if we will start from if, that what is given to us we will start from that. So here we will start. So we will write here DE is parallel to OQ. If this one is given, then we can write a ratio. Which ratio we can write? That PE upon EQ, and that will be equals to PD upon DU. And that is our equation number 1. हमने ये कहाँ पे से लिखा? So which we use if lines are parallel, it comes in ratio. We wrote this from basic proportionality theorem. So in bracket we will write, every time you have to write this one is very important. First condition लिख ली. Now we are moving towards the second figure. Second figure क्या होगी? तो this part POR we have to take that because in second they gave this DF is parallel to QR. So हम यही figure draw करेंगे. We will draw that figure and we will write whatever condition we want. So again we will write here what we can see. So here we can see that here if this line is parallel to this, we can write the ratio. So हम लिख सकते हैं PF upon FR, PF
upon FR, that will be equals to this PD upon that DO, and that is our condition number 2. And how we wrote it? Because from basic proportionality theorem, ये चीज हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम में से लिखी. नाउ दिस इज वेरी सिंपल थिंग. जस्ट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी पी डी अपॉन डी ओ है एंड दैट इज इक्वल्स टू समथिंग, एंड इन अगेन द सेकेंड इक्वेशन that is PD upon DO. But here PD upon DO is equals to what? So let me write, it is equals to PF upon FR. तो मैं पहले ये वाला लिख देती हूँ, PF upon FR. Now I will move towards the equation number 1. This is equation number 2. We are moving towards equation number 1. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं that PD upon DO is equals to PE upon EQ. तो वहाँ पे मैं लिख दूंगी that is equals to PE अपॉन EQ. जैसे मैंने आपको बताया that what you can see over here, that is PF, right, upon FR, see the figure, and PE upon EQ, that made this whole triangle. And in that whole triangle, if ratios are equal, then you can write EF is parallel to QR. So here we will write our answer, that if this is equal, then we can write that EF is parallel to QR. And how we wrote? So यहाँ पे हम लिख देंगे by converse BPT, converse dot BPT. So this sum is very easy for